So, yes, today we're going to cover some of my favorite interactions that can help you take a lot of inspiration as a marketing designer. It's not just about interactions, but it's also about keeping track of, the small, subtle details that sort of make your website really stand out. So, they use a very good blend of colors and illustrations and animations and text to make sure that you stay hooked onto their website. So, the first website that we cover today is Mightyapp.com. So it's basically for a new browser that works really fast. And the most gorgeous part about this website is their color scheme and the way they use interactions to keep you hooked as you vertically scroll through the entire website. So as I always recommend, you should always see websites in both desktop view, tablet view. You can also try it on phone view as well. So I want you to sort of go check out this website and scroll and see how things move एज दे कम इनटू योर व्यू पोर्ट. तो जैसे जैसे आप वर्टिकली स्क्रॉल करते हो, अगर कोई विंडो आ रही है, कोई पॉपअप आ रहा है, कोई टेक्स्ट आ रहा है, उन्होंने बहुत छोटे छोटे ऐसे इंटरेक्शंस डाले हुए हैं जिससे आपका डिलाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. एंड इन ऑर्डर टू प्रायोरिटाइज देयर टेक्स्ट दे हैव मेड वेरी कूल वेक्टर इलस्ट्रेशंस ऑन द राइट साइड. सो आपको मोर और लेस पॉइंट समझ आ जाता है विदाउट competing for attention, because in the end you want them to read your text. Second recommendation is this judo.app. Is website pe jaake the most interesting part was that they not only have a wide screenshot, क्योंकि इनका platform is a desktop app, right side पे they scale a mobile recording and they animate that. So क्या होता है कि जब आप एक desktop GIF को animate करते हो, the real estate area is so big that you don't know where to look. But इस case पे they play it very very well. So they have a white website. वही वेबसाइट के अंदर दे हैव लाइक अ ब्लू डिव. यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू डिव के अंदर दे हैव अ स्क्रीनशॉट, लाइक अ वाइट स्क्रीनशॉट with it, which is absolutely static. And then on the right side you have something dynamic, which is a very interesting way to show कि ये हमारा design था, ये हमारा final implementation था, right? So it connects everything very well together. Then we have passbase.com. The most gorgeous part about this website is that they don't use flat illustrations. They've used their shapes and they've used like clay 3D models, right? So clay 3D models look very modern, like they look very smooth. And जैसे जैसे आप vertically scroll करते हो, those bright gradient clay models sort of move into a parallax effect. So it's a very very smooth transition, and all of these transitions are easy to develop on Webflow, right? So अगर आपके पास एक बेसिक नॉलेज भी है ऑफ वेबफ्लो, यू कैन सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंट दिस, क्योंकि वेबफ्लो ने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सी वीडियोस डाल दी है अराउंड दीज इंटरेक्शंस. तो इसमें जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीएनजीज. तो क्या होता है, दे मेक दीज 3D मॉडल्स एंड देन दे एक्सपोर्ट पीएनजीज. दे कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट वेबएम्स अगर उन्होंने एनिमेटेड रखना है, बट यू कैन ऑल्सो डू इट इन द फॉर्म ऑफ पीएनजी. सो आपको 3ds Max या माया सीखने की जरूरत नहीं है. यू कैन एक्चुअली डाउनलोड स्प्लाइन. So Spline is basically a very good 3D software, online run karta hai. It's almost like Figma and very easy to use. So you can make these shapes on Spline and then animate them on Webflow. Next, when you go in this website, they have a step by step process. उनको अपनी वेबसाइट पे दिखाना होता है कि हमारी ऐप में ये सब स्टेप बाय स्टेप होगा. टू शो दैट व्हाट दे डू इज वो फोन को लेफ्ट साइड पे स्टैटिक रखते हैं, राइट? इधर जो आप फोन देख रहे हो ये स्टैटिक रहता है. एंड एज आई वर्टिकली स्क्रोल, these bullet points appear one by one. So I'm not showing the entire interaction right now because you can always go through the website. But इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि टेक्स्ट एक जगह फिक्स्ड रहता है. नॉर्मल वेबसाइट्स में जैसे आप वर्टिकली स्क्रॉल करते हो, टेक्स्ट और बुलेट पॉइंट्स ऊपर चले जाते हैं. ऐसा लगता है कि आप एक पेज को रोल करके ऊपर पढ़ रहे हो, राइट? इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्क्रॉल. इस केस में things are static in one spot, so your eyes don't need to move. And then as you vertically scroll, the bullet points are updated. In fact, even the screenshot that you see, it gets updated as you scroll. So it's all triggered by your vertical scroll. Next recommendation is Zeta.tech. Now this is an Indian company and इसमें बहुत छोटा सा इंटरेक्शन है जो मुझे बहुत बढ़िया लगा. एंड दैट इज कि जैसे जैसे स्क्रॉल करते हो एंड में इनको एक वीडियो प्ले करना होता है, राइट? सो दे हैव अ कवर. अब हो सकता है कि मैं कवर पे प्ले ना करूं, राइट? बिकॉज आई डोंट हैव मच इंसेंटिव. बट ये जो प्ले का बटन देख रहे हो इसके पीछे एक पल्सेटिंग सा एनिमेशन है. Most probably it's a lottie file, but that one single lottie file plays such a big role. Thank you so much, Pranay. Thank you so much. So it plays such a big role, right? Because आपको लगता है कि it is calling me, it is inviting me. So that small little touch adds a lot. And I was talking about Webflow. So here's a Webflow template that I was really impressed with, and it's called Aurora template. So it's basically for a meeting app. Like they've pretended that they're selling a meeting app, but इसमें इतना
तगड़ा इंटरेक्शन होता है. There's like a phone screen, and as you scroll, ये जो window है, it sort of zooms in, so it's like a very very immersive effect, and I absolutely loved it. Yeah, like you should go and just Google Aurora template on Webflow and see how they've used very very subtle gradients, and like just PNGs floating in and out, right? Like it just shows you that you can use primitive features in such creative ways. Like it's very very cool. Next, we have supperice.com. I'm still not sure if I'm pronouncing this right. So it's not just about interactions. What I wanted to show here is that जब आप अपनी marketing website बनाते हो, you are essentially asking the consumer or the visitor to trust you. But the thing is, the consumer will not trust you until unless you give them something very valuable. The best way to get their trust is to first tell what you do, then allow them to use their services for free, and then just below the CTA, जैसे इधर try for free है, right? Like आपको try for free दिख रहा है, but try for free करते हुए भी मुझे क्या डाउट होता है, मुझे यूजुअली 2 या 3 डाउट्स होते हैं जो हर कंज्यूमर को होते हैं. पहला, इज दिस एक्चुअली लाइक अ फ्री ट्रायल, एंड कितने दिन का फ्री ट्रायल है, क्या मुझे अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ेगी, एंड अगर मुझे बीच में कैंसिल करना पड़ा, कैन आई स्टिल कैंसिल, राइट? अब ये फियर्स आपको पहले से पढ़ने पड़ेंगे, ये फियर्स आपको पहले से जज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये 3 पॉइंट्स नहीं होते तो शायद मैं सीटीए पे क्लिक ना करता, राइट? सो इट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी कि आप अपने सीटीए के नीचे सिर्फ 3 ग्रे बुलेट पॉइंट्स डाल के अपने कन्वर्जन इंक्रीज कर सकते हो, बट वो बुलेट पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जहां पे यू एड्रेस योर कंज्यूमर के फियर्स, एंड मेजरली यही 3 फियर्स होते हैं. पहला कि ये कितने दिन का ट्रायल है, दूसरा कि मुझे अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालने की जरूरत है बिकॉज मुझे डर लगता है अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर देने में, एंड तीसरा कैन आई कैंसिल अगर आगे जाके मुझे प्लान को बंद करना है. Yes, Srivastav, I know that the video playback it can be smoother. Yes, and we're working on the update. It's going to come out pretty soon. But yeah, thank you for the feedback. Thank you so much, Prabhat. Thank you so much. Oh, this next website is just ultimate, man. This website right here was an absolute game changer. So iPad Pay, just like Procreate, there's another app. It's called Vectornator, and they have absolutely aced it with their website. So you go to their website, and they have like vertically triggered animations all over. They have this thing called use cases. अगर आप use cases पे जाओ, they have a very scalable design for all individual use cases of this app. So I was extremely inspired when I saw this, because they've used very primitive, like primitive text, primitive colors, and they've sold their app in a very good way. Like the way they've used their typography, their colors, their animations, everything is on point. So जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक print का example दिखाया है, अगले example में you have UI design. So इतना immersive website है. The way they have played with gradients is absolutely impressive. 100 out of 100 for the visual design and the interaction design of the entire thing, right? And I really love when the entire framework of the website goes beyond boundaries. तो ये एक section है इनकी website में UI design में, जब आप नीचे scroll करते हो, जहाँ पे they don't have rectangular divs, they've made waves, and they are dotted waves, and like it's a top view of the gadgets placed on the website. Like absolutely gorgeous. I absolutely loved it. You should 100% check out everything about this website. Next, we have pipe.com. So this is basically like a finance app, but इसका सबसे cool interaction ये है कि beginning में जब आप नीचे scroll करते हो, so they have a desktop app, like a desktop का screenshot, and there's a mobile screenshot as well. Like there's some part of it. So I'm not sure if this is still like a mobile का app or like it's a part of their web app. But as you scroll, ये जो आप white और black का division देख रहे हो ना, it is triggered by my vertical scroll. तो ये initially black होता है, और जैसे जैसे मैं वर्टिकली स्क्रॉल करता हूँ, ये पे आउट की रिसिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है. इट इज अ वेरी वेरी कूल इंटरेक्शन. लाइक मैं जब तक नीचे पहुंचता हूँ, इट बिकम्स लाइक अ प्रॉपर पे आउट रिसिप्ट, एंड इट्स लाइक 1 क्लिक इंस्टेंट पे आउट. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. व्हाट अ स्टनिंग इंटरेक्शन. एंड जैसे ही मेरी रिसिप्ट आती है, ये जो आप पीछे बैंक का कार्ड देख रहे हो, ये भी ऐसे गिरता है. लाइक इट जस्ट स्लाइड्स फ्रॉम द राइट. What a delightful interaction. I loved it when I saw it. Oh, this website, I found this during the lockdown. It's a pretty old website. And I loved it because it just broke all the rules. So, इस website पे जब आप जाते हो, even your cursor looks like a sketched play mark, right? So, it's a very interesting interaction when websites replace the original, hand cursor by something that is customized to them, right? Because you have full control. तो वो जो cursor है, वो ही play button बन जाता है. So, I know कि मेरे को क्लिक करने पे एक फिल्म दिखेगी और a video दिखेगी, and they've used like a very cute scribble animation sort of a thing.
once you enter their website, they have used like a really good typography, like black and white typography, and like handmade sort of illustrations to make the entire thing look very, very organic. So like very, very cute stuff. And you scroll, and as you scroll, you sort of trigger more and more animations. So cutthequarantine.com, very, very well made website, absolutely loved it. So the last resource is something which is like, it's not an interaction, but it's like a very small detail. So it's like a loading state. तो आप वेबसाइट खोलते हो, एंड व्हेन यू लोड करते करते दे हैव अ काउंटडाउन, तो 0 से 100 आपका लोड होता है. तो इसमें बीच में एक फिश है, वो फिश ओरिजिनली फुल होती है, लाइक इट्स अ फुल फिश. जैसे जैसे आप 0 से 100 जाते हो, वो फिश के बोन्स दिखने लग जाते हैं, एज इफ यू आर ईटिंग इट, राइट. सो इट फिनिशेस, तो जब तक लोडिंग हो रही होती है, यू स्टे हुक्ड, यू डोंट गेट बोर्ड. एंड नीचे दे हैव अ वेरी क्यूट सब टेक्स्ट विच सेज गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट. So now not only they're keeping you hooked, they have given like a very cute copy that makes you feel good about waiting as well. So yes, I think someone is asking, as a fresher without no experience, we want jobs of UX designer. So it is very important ki aap, you should actually go here. I'm just pasting a link right here. Go to this link, because this is where you will get a step by step पूरा प्रोसेस ऑफ हाउ यू कैन बिकम अ यूएक्स डिजाइनर फॉर फ्री. क्योंकि मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे एक 15 एपिसोड का कोर्स डाला हुआ है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जहाँ पे मैं आपको सारी रिसोर्सेज देता हूँ. सीवी कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, अपनी जॉब्स के लिए शॉर्टलिस्ट कैसे करना है, सारा प्रोसेस मैंने बहुत डेप्थ में बताया हुआ है. बट येस, वी हैव अराउंड 58 पीपल लाइव. तो अगर आज आपने इस लाइव स्ट्रीम से कुछ भी सीखा, इट वुड बी ग्रेट अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालो एंड टैग मी ऑन anshmehra.work. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने रिव्यूज डालते हो, इट्स रियली नाइस टू सी. एंड अगर आप सोच रहे हो कि मेरी लाइव स्ट्रीम इतनी बढ़िया कैसे दिख रही है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ Zuddl Studio. I'm using my our own company software. I've been working at Zuddl for a very, very long time, and I've been working on Zuddl Studio for a very, very long time. So you can try it for free. अगर आप YouTube पे अपनी streams को इतना cool दिखाना चाहते हो, you can actually just figure out and make your live streams look very well. So yes, now it's time for our live Q&A. अगर आपको कोई भी questions है, कोई भी doubts है, you can put them in the chat section. And yes, one important announcement that I am actually hosting my last workshop on Daisy. तो अगर आपको Notion पे अपना portfolio कैसे बनाना है, Notion पे अपनी website कैसे बनानी है, if you're interested in that, you can always join me on Friday night, I think 9:30 p.m. So it's going to be a live session. बहुत मजा आएगा. एंड संडे दिल्ली यूएक्स मीटअप तो हो ही रहा है, तो जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया था, आई थिंक अराउंड 180-170 पीपल रजिस्टर्ड फॉर द दिल्ली यूएक्स मीटअप, एंड उसमें से आई हैव सेलेक्टेड 16 to 18 पीपल. तो वो 16-18 पीपल आएंगे, विल हैव अ गुड टाइम. बट डोंट वरी इफ यू डिडंट मेक इट टू द फाइनल कट, बिकॉज हम दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, बैंगलोर में, मुंबई में, हर जगह अलग अलग स्टेट्स में यूएक्स मीटअप करेंगे, एंड आई वुड लव टू मीट ऑल ऑफ यू. सो यस, अगर आपके पास कोई भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको गूगल से नहीं मिल सकता है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आपको गूगल पे, मीडियम पे, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप वो क्वेश्चन मेरे से अब पूछ सकते हैं. So yes, let me bring the top cover back, because I loved this one. I really liked it. And yeah, how to become motivated for UI designer. It is just about just being happy about what you're doing. Take care of your body and your mind. Try to work out. Try to meet people who are working on themselves. Overall, you will be motivated. Bro, I'm going to IIT and studying UX UI design. Any suggestions? Rishabh, that's great. Congratulations. It's very difficult to get into the IITs. How to apply for UI UX job position? So Abhijit, as I said, मैंने अपने ही कोर्स पे एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है as to how you can get job applications. तो यहाँ पे आपको फ्री पूरा आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, फ्री UX कोर्स on jobs. राइट, सो यहाँ पर आपको सब कुछ इन डिटेल मिल जाएगा. आई हैड अ रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज शेयर यूजफुल 2 to 3 ब्लॉग्स एवरी डे ऑन इंस्टाग्राम. सो चंचल, मैंने एक ब्लॉग्स के ऊपर ही लास्ट लाइव स्ट्रीम बनाया था. अगर आप उन्हीं ब्लॉग्स को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, तो यू विल हैव इनफ इन्फॉर्मेशन. आई डोंट थिंक आपको उससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की नीड है. दैट इज मोर देन इनफ. Which tool to use for making user journey map? I use Figma only. So you can use Figma, you can use Miro, you can use FigJam as well. All of these tools work. Otherwise, you can use pen and paper as well. So yes, any other questions? And folks, I hope you're going to post something on Instagram, because without your support, it's very difficult to reach out to more people. Because even though I have subscribers, very few people come up and show up and watch the videos, which is very weird, right? Like, why won't you folks actually come and see all the videos? Hello, sir. How can I contact you? Instagram. Very simple. Just put me a message on Instagram and I'll be there. Have you heard about this bootcamp called Own Path? Do you have any reviews? No, I've never heard of them.
not yet. Unrelated, but what are your views on hard determination? I mean, I feel like you need some kind of determination to achieve something substantial in life, but and I don't have any strong views on it. I talk about all this motivation stuff on my podcast. It's called Take It Easy. It's there on Spotify. Can you make a full day video or blog of your daily schedule work in Zuddl? I wish, Sukhpreet, I wish, but like things become so hectic. Like stuff has become so hectic. In fact, अगले week से I am actually launching a new series. अभी मैंने फॉर्मल अनाउंसमेंट किया नहीं है, बट आई एम जैसे मैंने यूएक्स के ऊपर एक सीरीज बनाई थी, मैं एक नया कोर्स बना रहा हूँ ऑन अ कंप्लीट गाइड टू यूएक्स डिजाइन फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड फाउंडर्स जो अपनी कंपनी खोल रहे हैं, जिनके पास एक अच्छा आइडिया है। तो आप आइडिया के बाद हायर कैसे करते हो डिजाइनर्स को, क्या एवरेज सैलरीज रहती है, क्या प्रोसेस होता है, उसके ऊपर एक कोर्स है। Hey, and so my question is that should I go for internships or should I search for jobs in small startups or big companies? Again, Pranay, I would recommend you to check out. I have made a very, very in-depth video on this entire subject. It's called "Getting a Job in Startups." So, उसमें मैंने ये आंसर करा है कि क्या करना चाहिए. Do these cohort courses worth it? Like paying 70, 80K to learn something which is freely available over YouTube and other platforms. So, Srivastav, it's all about how disciplined you are. राइट अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आपको किसी को पैसे देने पड़ेंगे, जब आप पैसे दोगे तो आप और मोटिवेटेड रहोगे, बट अगर आप में डिसिप्लिन है आप खुद से भी सीख सकते हो। कोहोर्ट का मेजर फायदा ये है कि यू कनेक्ट विद अदर पीपल, सो आपको एक ही डिस्कॉर्ड सर्वर पे या एक ही कम्युनिटी पे बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं। दैट इज वन थिंग दैट यू कांट गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर। बट अगर सीखने की बात आती है, यू कैन इजीली लर्न एवरीथिंग एल्स फ्रॉम द इंटरनेट इफ यू आर डिसिप्लिन्ड इनफ, इफ यू हैव दैट विल पावर टू स्टे कंसिस्टेंट। Okay. How to build portfolios as a UX researcher? You just need to have, 3 or 4 case studies. You can actually pick up actual apps, ab real apps utha ke you can, pick problem statements and do your own surveys. इनफैक्ट केस स्टडीज की बहुत सी रिसोर्सेज मैंने एक वीडियो में शेयर भी करी थी, जहाँ पे एक वेबसाइट थी जहाँ पे दे गिव यू अ ब्लूप्रिंट, like step by step blueprint of writing a case study. Just go on my YouTube channel, write UX case study, you will get that video. Few days ago I had an interview for UX internship, and as a task they asked me to design exclusive illustration. I know illustrations are needed, but how they relate to my process? No, you don't need any illustration experience. Hi Sukriti, hi. There's a Mr. Beast also in the live chat. Wonderful. So yes, if you have any other questions, we'll stay for 5 minutes more, and yeah, I'll meet you next Tuesday as well. How do you manage your job, personal life, YouTube, and other works? Chanchal, it is a very difficult task. I'm telling you, it becomes very hectic, becomes very overwhelming. You've missed social life as well, where you go out and network with people and just have like a social life. So yeah, it's a pretty tricky spot to be in. How to crack interviews? I'm not sure actually. I've given very few interviews. I just give my interview for Swiggy and Unacademy and Zuddl, and three or four actually more companies. Yeah. I think it's just about being good at what you do and just being very transparent about what you know, and being able to articulate what you're thinking. Hello, one, should I go for UI, UX or front end development? Which one has better prospects in terms of scope and salary? Gaurav, both get the same amount of salary. I think both of them ka starting salary for a good person who's experienced with a 1.5 or 2 years ka experience with enough case studies and enough in their portfolio, get around 70 to 80K per month. Both of them get it. दोनों को 70-80,000 rupees per month मिलती है, and both of them grow. And I know designers who are making very very high amounts of salaries. We've gone through that entire topic many times. What is your review about 10K designers UX cohort? I like it. It's by a friend itself. So I really like what he's been doing with the entire cohort. I love it. Abhinav is a pretty smart guy. Want to get started with building my personal brand, but not sure how. Any quick tips? Not sure, Srivastava, because I'm still figuring it out. I am also working on building my own personal brand. So not sure. How to improve storytelling skills? So I think you should study celebrity interviews. There's a YouTube channel called Charisma on Demand. You should 100% check out that. And mostly it's about being good at talking, right? So just practice talking with your friends, with your family members, and you will just get better at it. मैंने एक proper video बनाया इस पूरे topic पे, how to become a storyteller, on my YouTube channel. So if you haven't checked that out, I would recommend you to go on this link and find that playlist. As a fresher with no experience in UX design, how can I get a job? Walter Studio, I've just pasted a link in the description of my course. Just finish those 15 videos. आप हिंदी में भी देख सकते हो, English में भी देख सकते हो. That is more than enough to get your first internship. Can you make a video on making Behance posts with case study included? That's a good idea, but I haven't made too many Behance posts lately, so I don't think I'm the best person to
opt for that. So yes, if you folks have any other questions, as one last time on Friday we are meeting live for the Daisy workshop. तो अगर आप लोगों को आना है, you can always meet me there. And yes, I hope that you learned something today. Next Tuesday हम actually अपने नई series का पहला वीडियो लॉन्च करेंगे. तो अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है, यू कैन ऑलवेज कम ऑन इंस्टाग्राम. अगर आपको लाइव स्ट्रीम अच्छी लगी और अगर आपने सही में कुछ अच्छा सीखा, मेक श्योर यू पोस्ट अ स्टोरी, बिकॉज आई रीड ईच एंड एवरी स्टोरी एंड आई अप्रिशिएट ऑल योर सपोर्ट. सो यस, नेक्स्ट ट्यूसडे हमारा नेक्स्ट सीरीज का पहला एपिसोड लॉन्च होने वाला है. आई होप यू हैड अ गुड टाइम. थैंक यू सो मच एंड I'll meet you next week. See you folks. Bye.